बकाया है? ये 1,35,000 रुपये, जिसमें से श्रीमान ने 28/6/22 को 50,000 इमीडिएटली जमा करने के लिए आदेश किया था नॉन अवेलेबल वारंट से। तो उसकी कंप्लायंस आज दिनांक तक नहीं हुई। 50,000 जमा करने का आदेश किस तारीख को दिया था? 28/6/22 में। 28/6/22। चौदह 6/22 में नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हुआ था। अब इसको नॉन अवेलेबल अरेस्ट करवा देते हैं। 25,000 पिछले हफ्ते दे दिए। लेट हिम बी इन जेल नाउ। हर महीने 25,000 देते जाने चाहिए, 1 लाख के आसपास हो जाएगा पूरा। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर को आप सीरियसली ले नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट आपने उसी दिन कहा था साहब 25,000 में जमा करा रहा हूँ। बिल्कुल 25 जमा करा दी थी उस दिन मैंने। वो भी आपने क्या कहा था उसके बाद? और इसको आएगा 25 जमा करवा दें, क्योंकि पहले ऐसा हो गया, फादर को मालूम सकते हैं वो। अब उसको अब जेल जाने दो। है आया है नहीं आया है? उसके तारीख साथ में मालूम, फादर साथ में। और लेट हिम बी इन सिविल प्रिजन। 25,000 तो करके नहीं देते हैं तो सिविल जेल जाना, और 25,000 कर दो ऑर्डर था। 25,000 तो जमा करे पुलिस वहाँ जाए। नो। अब नाउ यू हैव डिफॉल्टेड, नाउ यू सफर द consequences। पैसे तो मिल रहे हैं मंथली, 25,000 रुपये में इनका भरण पोषण हो जाएगा। अच्छा क्या करोगे अब जब आप कोर्ट के ऑर्डर को मानना नहीं है? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर तो मालूम है, कोर्ट के ऑर्डर से ही तो दे रहे हैं मालूम। हाँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्यों कोर्ट का ऑर्डर क्या आपने चैलेंज तो किया नहीं उसको? नहीं, चैलेंज तो करेंगे मालूम, कोर्ट ऑर्डर करेगा तो नहीं करेगा। जब आपने चैलेंज नहीं किया तो कंप्लाई करिए। कंप्लेंट कर देंगे मालूम, 25,000 दें और दे देंगे मालूम। आज दीजिए पैसा। आज तो मालूम मैं पूछ लेता हूँ, होगा उसके पास। नहीं वो यू आर प्लेइंग ब्लफ विद द कोर्ट। नो यस यार, you are bluffing the court. नो मालूम। Last time also you made false assurances. Yes. And you have now betrayed again. I don't think you deserve any sympathy. 1 वीक टाइम दे दे मालूम। No. दे दूंगा मालूम, No, जैसे भी करवा देंगे उसको। Mr. Counsel, otherwise I will settle cost on you. If without instructions you are seeking time, and then you come back with a long face that he doesn't have money, his father has fallen ill, he is suffering from paralytic attack, so please give us time. Do not make loose statement in the court. On facts, if you make a statement, first seek instructions. Don't make false statements. Otherwise, I may also hold up you for contempt. It is not a bargaining platform. If the court order is there, either comply with it or face the consequences. Next week There is no instructions from the client. You are arguing as if it is your own personal case no. and making all sorts of statements without instructions. You have flouted the orders many times in the past. We have adjusted you. Still you are not mending your ways. It means you are not interested to comply with the order, and then you suffer the consequences. Total absurd things you are talking. नेक्स्ट वीक करवा देंगे, नहीं तो मैं करवा देंगे। This is your personal responsibility. Yes. Yes. You have to pay. Yes. Then you sign the order sheet that yes, it is my personal responsibility to ensure. Are you prepared to sign the order sheet? What kind of argument are you advancing? I do not know. You are an advocate. You must know your limitations. In everything you are saying yes. हाँ समझ तो रहे हो और लिखवा भी रहे हैं तुम्हारे लिए अब हम। नहीं वो नहीं देगा मालूम, तो मैं कैसे भी करके व्यवस्था करवाऊंगा। अच्छा अच्छी बात है, चलिए देखिए। Despite repeated orders of the court, the respondent husband has not complied with the order of payment of 50,000 rupees in full. Only 25,000 rupees has been paid, though the outstanding dues are to the tune of rupees 1,35,000. No, only 25,000 मालूम मैं। Outstanding dues. आउटस्टैंडिंग 1,35,000। 35,000. Stop.
the respondent husband has not only betrayed the appellant wife but also has flouted the court orders despite issuance of non-bailable warrant against him. So this court had given indulgence on the assurance given by the counsel for the respondent. To pay 25,000 rupees within 1 week from the date 21/7/22. 25,000 mark. वही लिखाया है. But the payment has not been made. So that counsel for the appellant submits that respondent be sent to civil prison at the cost of the appellant for non-compliance of the court orders. The appellant wife is without means of livelihood. Stop. Recurring avoidance of payment of maintenance, interim maintenance, tantamount to depriving the appellant wife of means of livelihood. Stop. At this stage, Shri so and so makes the statement at the bar that though he has no instructions from the respondent, but he will ensure payment of 25,000 rupees on or before next Monday. If the appellant fails to deposit, the counsel shall deposit from his own sources. ठीक है मामा, हम दे पाएंगे. आप ही ने कहा है अभी, नेक्स्ट वीक का कहा है. आपने कहा कि नहीं तो मैं दूंगा. हाँ, नेक्स्ट वीक क्यों लिख रहा हूँ? वो तो दे देगा मामा. आपने कहा, इस बात को नहीं कहा आपने. यस. लिखोगे ना, लिखो, लिख रहा हूँ मैं आपकी बात. दिलवा दूंगा मामा. नहीं, आपने कहा इसमें लिखवा रहा हूँ, क्यों? आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं है. नहीं मामा लेके आओ. नहीं वैसे भी कोर्ट में कह रहा हूँ मामा, तो जरूरी नहीं है. नहीं, आपने पिछली बार भी कहा था. पिछली बार तो कहा था दलवा दी 25,000. नहीं, उसके बाद भी कहा था रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज शैल ही अंडरटेक दैट रिमेनिंग अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड विद इन अ वीक. वो नहीं किया आपने. अभी आपने कहा साहब वो नहीं जमा करे, मैं जमा करूंगा. आपने कहा ना. मैं पूछ रहा हूं आप क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं, बताइए आप एज अ लॉयर. जमा करेगा मामा. नहीं, वो आप नहीं करे. यू विल नॉट पर्सनली पे ना. तो डोंट मेक सच लूज स्टेटमेंट इन द कोर्ट. चलेगा आपने है? नो, छोड़ दीजिए उसको. नेक्स्ट वीक बाय मंडे. स्टॉप. इफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड, दी कहाँ का केस है ये? मुरैना का. The SP Morena shall ensure arrest of the appellant, respondent husband, shall arrest and produce before this court for the to face the consequences flowing from such flowing from non-compliance of the court orders. List on Monday. आइंदा से ऐसा स्टेटमेंट कभी मत देना. हाँ, तुम वकील की हैसियत खड़े हुए हो, उसके हस्बैंड नहीं हो तुम. अभी भी शर्म नहीं आ रही है, हंसते हुए जा रहे हैं.